Welcome once again. Today we are going to start last exercise of our chapter algebraic expression, that is chapter 12. So let us start exercise 12.4. In this chapter we have already studied what expressions means, algebraic expressions, terms, factors, coefficients, and on the basis of these all terms we have seen what are like terms. Okay, these are the terms which are related, which are very important in algebraic expressions. Today we solve some pattern type questions. So let us proceed with exercise 12.4, which is before you. The first question goes like this. You are given with patterns. You are given with some patterns. You can see there are three parts in first question, and let us consider each part one by one. So ये pattern है. Observe the pattern of digits made from line segments of equal length. जो pattern है ये line segment से बने हुए हैं. Okay, you will find such segmented digits on the display of electronic watches. ये आपको ऐसे digits कहाँ मिलते हैं? Where? Yes, in watches. Okay, so ये लिखा हुआ है. हम जब उनको जो ये सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से जो लेटर्स बने हुए हैं, यू कैन सी दिस लेटर्स इन डिजिटल वॉचेस, इन रेलवे स्टेशंस वॉचेस. ओके, एंड सम डिजिटल फॉर्म्स, जैसे इन्वर्टर में भी कभी कभार जो डिजिटल डिस्प्ले होता है उसमें आपको नंबर आपको ये मिल जाते हैं. नाउ if the number of digits formed is taken to be n, the number of segments required to form n digit is given by the algebraic expression appearing on the right of each pattern. मतलब क्या बताया जा रहा है? We make one picture, then we make two picture. First we make one letter with the help of segments. After that we join two letters. After that we join three letters, four letters. So we are taking different numbers of letters. कुछ letters ले रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है हम n letters ले रहे हैं, तो on the basis of n letters ले रहे हैं, एक आपको नंबर दे रखा है. Let us see the pattern. This pattern is given. If you see every letter separately, पहले में एक लेटर है, दूसरे में 6 लेटर है, सॉरी 2 लेटर्स हैं, तीसरे में 3 लेटर्स हैं, नेक्स्ट टाइम 4 लेटर्स हैं. बट व्हाट हैपन इन फर्स्ट लेटर वी हैव गॉट 6 segments, and in second letter we don't have 12 segments, we have 11 segments. भाई अगर 2 लेटर ज्वाइन किए हैं हमने, तो एक में अगर 6 हैं तो दूसरे में 12 होने चाहिए, तीसरे में 18 होने चाहिए. बट यू कैन सी लेटर्स डबल नहीं हो रहे हैं, सॉरी सेगमेंट्स डबल नहीं हो रहे हैं, जबकि लेटर्स 1 2 3 होते जा रहे हैं. तो यही पैटर्न हमको पढ़ना है. ओके, यही पैटर्न हमको पढ़ना है. दैट इज व्हाट 5n plus 1. ओके, अब व्हाट इज n is number of these letters taken in one go. n is number of letters taken in one go. दिस इज लेटर. लाइन सेगमेंट कितने हैं इसमें? 6 हैं. चलो आगे देखते हैं इसको, हम लोग एक बार फिर से कंसिडर करते हैं. तो ये पैटर्न हो गया. फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट्स ऑफ इट्स काइंड. मतलब एक को जब हमने लिया तब 6 लाइन सेगमेंट लग रहे हैं, 2 को लिया तो 11 लग रहे हैं, 3 को लिया तो 16 लग रहे हैं, 4 को लिया तो 21 लग रहे हैं. ऐसे अगर हम n को लेते हैं तो क्या लाइन सेगमेंट लगने वाले हैं? 5n plus 1. This types of pattern we have made in class 6th. Okay, so ये पैटर्न हो गया. क्या पैटर्न है? 3n plus 1. Now if we take 5 digits, if we take 5 such numbers, then we have to put
what 5 at the place of n, then what you will get? You will get this, and the total number of line segment used is 26. Similarly, if you make 10 digits, if you joining 10 digits, then you have to put this 50 plus 1, that is 51. Similarly, if you are using 100 digits, then you have to put what? 100 and get the answer. Meaning is this, after reading this pattern, you have to find out the number of sticks, number of line segment used in 5 digit pattern, 10 digit pattern and 100 digit pattern. Okay. Now second figure is given to you. This is the 4, and the number sticks line segments used in one pattern is 4. However, pattern or formula, or we can say pattern formed for making some figures, some letters, some figures after joining these letters is 3n plus 1. ठीक है, जबकि एक में 4 लग रहे हैं, दूसरे में 7 लग रहे हैं, फिर 10 लग रहे हैं, डबल नहीं लग रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा. ठीक है. Okay, so this is the pattern, this is our formula, and if we take number of line segments required for to form 5 digits, we will put answer is 16. Similarly, number of segments required to form 10 digits, get the answer. Now for 100 digits, you get the formula, you need to put 100 at the place of n. So you can see how we can find out the number of line segments used in pattern of 5, pattern of 10 and pattern of 100 digit. Okay, let us move to part C. Okay, so number of segments required to form 5 digits, this 27. Okay, for 10 digits, put the value and get the answer. For 100 digits, put 100 and get the answer. Okay, let us move to question number 2. Use the given algebraic expression to complete the table of number patterns. Use the given algebraic expression. तो algebraic expression कौन सी है हमारे पास? Okay, this is the table before you. This is the table before you. This is the table before you, in which in first column, or we can say expression is given. फर्स्ट कॉलम में तो सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम में यू हैव गिवन विद एक्सप्रेशन, यू हैव गिवन विद algebraic expression depending upon the n, and you need to find out some what values, some terms on the basis of this number of term. तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट, this is the table before you, in which expression is given. First term is given, second term is given, third term is given, fourth term is given, fifth term is given, 10th term is given. You need to find out 100th term. So don't worry, the pattern is 2n minus 1. Then 100th term क्या है, हमको कंसिडर निकालनी है, where n is 100, हमको n पुट करना पड़ेगा. So when we put 100, what you will get? You will get 199. So 199 is the 100th term. 199 is what? 100th term. Okay. Let us move to part 2, in which here you need to find out 5th term, 10th term and 100th term. Earlier we found only 100th term. This time we are looking for 5th, 10th and 100th. Don't worry, pattern is this. हमको 5th term निकालनी है, where we need to put n equal to 5. जब हमने 5 put किया, you will get what? 17. तो 5th term is what? 17. 5th term is
17. नाउ अगेन पैटर्न ये है वेयर 10th टर्म निकालनी है एंड हमको 10 पुट करना है. आफ्टर पुटिंग यू विल गेट 30 + 2 दैट इज 32. सो दिस इज 32. नाउ 100 टर्म, हमने 100 टर्म की निकाला है. वी पुट n = 100 that is 3 × 100 + 2 that is 302. You get the answer. Now put the value. So you could see how we comfortably found these values. Let us move to part 3. Again a pattern is given and we need to find 5th, 10th and 100th term. 5th term is this. Simply now you are comfortably found these values because we need to put only values. 5th term में हमको n की जगह 4 put करना है. So 4 × 5 is 20 and 1 is added up. Then answer is 21. Answer is what? 21. For 10th term we need to put 10. Answer is 41. Similarly we need to find out 100th term. We need to put what? 100. Answer is 401. Sorry, यहाँ पे हमको 401 लिखना पड़ेगा. Let us make the one correction. Let us make one correction. ये यहाँ पे हमको इसको मैं रब कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे हमको लिखना है 401. क्या लिखना है? 401. ओके, बिकॉज यू कैन सी हाउ वी हैव कैलकुलेटेड. सो वी विल राइट व्हाट 401. नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. 401. नेक्स्ट पार्ट सॉल्यूशन. ये टेबल है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन है. विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वी फाइंड द टेबल. 5th टर्म के लिए हमने वैल्यू 5 पुट की. आंसर इज व्हाट? 55. आंसर इज 55. ठीक है, 55. सिमिलरली फॉर 10th टर्म हमने वैल्यू 10 पुट की. दैट इज व्हाट? 90. ओके. नाउ फॉर 100 टर्म हमने वैल्यू 100 पुट की एंड आंसर इज व्हाट? 720. नाउ फॉर 5th इसमें हमको केवल 2 ही टर्म निकालनी है. सो फॉर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है n² + 1 है. 5th टर्म निकालनी है. वी विल पुट n = 5 and this is 5 की पावर 2, 5 raised to the power 2, that is 5 × 5. ये 5 लिखा हुआ है, that is 5 × 5. What I am saying? I am saying for this. I am saying for this value. This is what? This is 5². That is 5 × 5. That is 5 × 5. I told you earlier. 5 × 5 is 25 and that is 26. Okay. Now you can put 26 at the place of 5th term and for 10th term you will put answer is 101 और 100 टर्म हमको दे रखी है. सो लेट अस सी complete table. That is like this. This is a complete table. Before you can see, you can solve these questions yourself and see this video for reference only. This is the table. Okay, ask for your doubt if any. I hope you have enjoyed the session. Thanks for watching.